Good morning, student. Today's our topic is special method of plant reproduction. This is our fourth chapter of first unit of embryology. As you know, reproduction in angiospermic plants generally take place by vegetative and sexual method. But in many plants there are some such methods of sexual reproduction in which new plants are developed without fertilization. Such methods are known as special method of reproduction. There are four methods of special reproduction: apomixis, agemospermy, micropropagation, and polyembryony. Agemospermy we studied earlier. As you know, agemospermy means A means absent, gemos means fertilization, spermy means seed. Formation of seed without fertilization or without meiosis is called agemospermy. ये अपन पहले पढ़ गए आज के फर्स्ट चैप्टर में. Now we are discussing apomixis. Hence Winkler was discovered in 1908 apomixis, or give this term apomixis. Apomixis means replacement of general sexual reproduction by such method in which meiosis and fertilization do not occur, termed apomixis. Embryologists have included vegetative propagation and agemospermy in apomixis. According to the above definition, apomixis is of two types. First, sporophytic apomixis or addentive embryony. Whenever any embryo is developed by diploid cell, as we know, sporophyte means diploid cell, or gametophyte means haploid stage or gamete. As you know, gamete is the structure in which the number of chromosome remains half, is called gamete, and by gamete a new plant is performed or reproduced, then it is called gametophytic apomixis, and without fertilization and meiosis. Whenever by diploid cells, or we can say in this type of apomixis, embryo may be developed from any diploid cell. और diploid cell आप लोगों को पता है, वापस याद करो, the structure of मेगास्पोरेंजियम. ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की स्ट्रक्चर है. तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? न्यूसिलस, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बाय न्यूसिलस और इंटेगुमेंट बाय चलाजा, embryo is produced, then it is called sporophytic or adventive embryony. And as you know, in the embryo sac all cells are haploid. These two cells is called synergid cell, this is called egg cell, this is polar cell or secondary cell, and these three cells are called antipodal cells. Whenever from these 7 cells any embryo is developed, then it is called gametophytic apomixis and without fertilization. Gametophytic apomixis is of two types: parthenogenesis and apogamy. Students, please emphasis these two terms. Whenever any embryo is developed from egg cell, this is egg cell. Whenever any embryo developed from egg cell without meiosis and fertilization, then it is called parthenogenesis. Second, apogamy. Whenever any embryo is developed other than egg cell of embryo cell,
एम्ब्रियो सेल की ये जो सेल्स हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक की ये जो सेल्स हैं, इनमें से एक्सेप्ट एग सेल को छोड़ दे और बाकी जितनी भी सेल्स हैं उनसे अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है, देन इट इज कॉल्ड एपोगेमी, मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एम्ब्रियो सेक्स सेल विदाउट एग सेल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपोगेमी। उसके बाद में एपोमिक्सिस को ही अपने इंडियन साइंटिस्ट पंचानन महेश्वरी, जो कि राजस्थान जयपुर के ही रहने वाले थे और उन्हें भारतीय इंडियन एम्ब्रियोलॉजी का फादर भी कहते हैं। पंचानन महेश्वरी ने दतुरा इनोक्सिया से हैप्लॉइड प्लांट फॉर्मेशन किया था, ठीक है। इन्होंने एपोमिक्सिस टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। द थिंग इज सेम, sporophytic apomixis and gametophytic apomixis, but he give to another term non-recurrent apomixis and recurrent apomixis. Non-recurrent apomixis term was firstly used by George Jensen, means for ये देखिए मैंने तीर का निशान लगाया है। नॉन रिक्रूटमेंट एपोमिक्सिस मीन्स गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, मीन्स whenever any haploid cell is developed into embryo, then it is called non-recurrent apomixis. Recurrent apomixis, second term, that is also we can say sporophytic apomixis. First of all, इसके भी 4 पार्ट्स किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनरेटिव एपोमिक्सिस, जेनरेटिव एपोमिक्सिस, सोमेटिक एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड वेजिटेटिव apomixis. First of all, generative apomixis. Whenever from pistil or we can say archisporial cells is developed, and archisporial cell कौन सी होती है आप लोगों को याद होगा कि न्यूसिलस की कोई भी cells, any cell of nucleus which is take part in megasporogenesis. So generative apomixis is whenever any cells of archisporial is developed into embryo. आर्किस्पोरियल की सेल्स जो है या कोशिका जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होती है, तो उसको क्या कहेंगे? जनरेटिव एपोमिक्सिस। सोमेटिक मीन्स बाय इंटेगुमेंट, बाय चलाजा, इनकी कोई सेल्स जब एम्ब्रियो में डेवलप होती है तो उसको क्या कहेंगे? सोमेटिक। और सेम यही चीज क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और लास्ट और फोर्थ टाइप है रिक्रूरेंट एपोमिक्सिस का, वो है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, जो अपन ने पीछे पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, आप लोगों को याद हो तो। whenever any bud which is converted into flower, or we can say whenever flower bud is detached from main plant and makes a new plant, that is called vegetative apomixis, just like agave, dioscorea are the example. तो ये अपना एपोमिक्सिस हो गया। अब क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्यों जरूरी है? जब अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एपोमिक्सिस क्या है? तो एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है मियोसिस डज नॉट ऑकर इन द प्रोसेस एंड एपोमिक्सिस, सो दैट सेपरेशन and recombination of chromosomes do not happen. Therefore, the plants formed by this process possess all the characters exactly similar to the characters of the mother plant. Due to this reason, apomixis may be used to prepare clone. Second, in the process of apomixis, seed are formed by asexual reproduction, so the clone offspring similar to the mother plants by prepared. Third, useful character can be conserved in crops plants by this type of reproduction. And fourth, hybrid seed may easily produced by this type of reproduction. Means hybrid seed are easily reproduced by this process. And apomixis checks degeneration of specific characters of hybrid plant. These are the 4 importance of apomixis. Second, एगेमोस्पर्मी अपना हो गया। थर्ड क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो मीन्स स्मॉल, प्रोपेगेशन मीन्स
culture. Whenever in large scale plants will be produced by any small, maybe cells, maybe tissue, maybe organ, इन सब से क्या करते हैं, लार्ज स्केल्स पे जब प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर कल्चर मीडिया. और कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा, पढ़ने पोलन जर्मिनेशन में पढ़ा था. कल्चर मीडिया में कार्बोहाइड्रेट, बोरोन एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल और सम हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल के एक मीडिया तैयार किया जाता है. उस मीडिया में क्या करते हैं, प्लांट पीसेस या प्लांट पार्ट, इट में बी सेल्स, इट में बी टिश्यूज, इट में बी ऑर्गन्स डालकर और एक साथ बहुत सारे प्लांट्स तैयार करते हैं. ये एक मॉडर्न टेक्निक है. और आप लोगों को पता है कि जब हम नेचर में अपने आप कोई काम होता है तो वो क्या है, इन वायो. और जब ह्यूमन की हेल्प से कोई क्रिया की जाती है या प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में कुछ तैयार किया जाता है तो उसको कहते हैं इन विट्रो. तो इन दिस मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्रोटोप्लास्ट, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गनो प्लांट्स आर कल्चर ऑन सुटेबल कल्चर मीडिया अंडर एस्थेटिक एंड कंट्रोल कंडीशन. बाय इन विट्रो कल्चर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यू, we can say first of all the structure is performed is called callus, and after increasement culture media, callus is converted into plantlet, and plantlet is after converted into plant. So this technique is very helpful in commercial condition of plants just like orchid and gladiolus. ऐसे जो plants है जिन को अपने को कॉमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करवाना है, उनको इस टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस करवाते हैं. फोर्थ है पोली एम्ब्रियोनी. पोली एम्ब्रियोनी इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहोक. एज यू नो, द लिविंग सेल्स इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहोक एंड द बैक्टीरिया इज आल्सो डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहोक. एंड पोली एम्ब्रियोनी आल्सो डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहोक in orange. What is the meaning of polyembryony? Poly means more than one. Embryony means embryo. Whenever the more than one embryo is produced is called polyembryony. These are the four conditions or four reasons of polyembryony we are discussing. First, cleavage polyembryony. Cleavage. What is cleavage? Cleavage is the division, just like mitosis, in which number of chromosomes remains same, but the size of cell is decreased. Just like this is a cell, and if here cleavage happens, then the size of cells remains half, but the number of chromosomes remains same. Whenever cleavage polyembryony, we can say it means as you know, the structure of embryo endosperm, the structure of endosperm, there is proembryo. There is proembryo means till now embryo hasn't developed. At that time one cleavage is happened. By cleavaging, these embryo is divided in two parts and both embryo developed separately. Then there is two embryo. So it is polyembryony. Second, development of embryo from cells of other than egg cell. This is egg cell, and we studied in double fertilization and triple fusion that egg cell is converted into embryo. If other than egg cell means synergid cell, antipodal cell or secondary cell also convert into embryo, then it is also polyembryony. Third, development of more than one embryo sac in ovule. If this is embryo sac which has 7 celled and 8 nucleate structure. If more than one embryo
is developed in ovule. Then as we know that one embryo sac has one egg cell. If there is more than one embryo sac in a ovule, then each embryo sac is developed in a embryo. So polyembryony happens. And fourth, adventive embryo means whenever nucellus integument cells are also developed in embryo, then it is also polyembryony. Significance of polyembryony. What is the significance of polyembryony? First, adventive embryo developed from nucellus are similar to the mother plant. Second, plants obtained from the embryos developed by the nucellus are full of vigor. Third, embryos developed from nucellus are disease free. Therefore, virus free clones of lemon variety can be obtained culture of nucellus. Fourth, haploid embryos have an important role in the field of cytology. Fifth, homozygous lines can be developed by treating these haploid embryo with colchicine, which play an important role in plant breeding. So these are the 5 importance of polyembryony. This is our topic. Special method of plant reproduction is completed. Students, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट आपको ये सब समझ में आ रहा होगा. कहीं कोई आपको कमी लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके. और आप लोगों को पता है लॉकडाउन गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया है, तो हमें ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपने स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो थैंक यू.